Hello students, a very good day to all of you. I hope all of you safe and healthy. So let's welcome to our chapter some basic concept of chemistry. Today our topic is Dalton's atomic theory. So let's come to our topic डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ने से पहले हम कुछ लॉ पढ़े थे जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. देयर आर वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस व्हिच आर कंबाइंस टू फॉर्म various type of chemical and physical changes of a reactions. After that, the Daltons at 1803 he postulates various theories according to atoms. So according to that, it is given by the name Dalton's atomic theory. The first postulate that is in your screen is all substances are made up of tiny individual particles called atoms. बच्चों, जो भी सब्सटेंस बनाया जाता है उसमें जो भी एलिमेंट्स है, फॉर एग्जांपल सोडियम इज एन सब्सटेंस, then only the sodium atoms are present on the sodium substance. So the atoms which are present or you can say the sodium atoms which are present on the sodium substance, these are very tiny individual particles that are very small particles. Next, second postulate में बोला गया है कि बच्चों जो भी एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स में जितने भी नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स पार्टिकल्स हो, मतलब कोई एलिमेंट्स ले लो, कार्बन का एलिमेंट्स ले लो, उसमें जितना भी नंबर ऑफ कार्बन्स प्रेजेंस होगा वो सारे क्या होगा, सेम ही होगा. उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका प्रॉपर्टीज वो सारे एक कार्बन एटम का जैसे होगा. सारे कार्बन एटम जितना भी उसमें कार्बन एटम होगा वो सारा उसका प्रॉपर्टीज और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक आर ऑलवेज सेम and the mass number is also same. If we take any sodium elements, then the mass is also same overall the substance. So the atoms are always like and the mass is also same. If we take different elements, then the mass also varies. For example, you can say any different elements, hydrogen or carbon or oxygen, then the total mass number is varies from one elements to the other elements. In the third postulates, बच्चों जो एटम्स को जो कि हम बोल रहे हैं सबसे छोटा इंडिविजुअल्स पार्टिकल्स है, ना ही हम उनको बना सकते हैं, ना ही कोई चीज़ है जिसको हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो there is no any creation or no any destruction in any type of changes that are in physical or chemical changes. So you have to focus on the universal truth, that is atoms cannot be created or not destroyed. बच्चों, in the last postulates is a very important. मैं यहाँ पे लिखी हूँ compounds or molecules results from combination of atoms in some simple numerical ratio. बच्चों मैं यहाँ पे जो compounds लिखी हूँ और molecules, compounds का मतलब क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई combination है. जब भी हम elements को combines करते हैं तो compounds formation होता है जिसको हम molecules भी बोलते हैं. लोगों बच्चों जो भी हम molecules और compounds formation करते हैं वहाँ पे जो भी atoms होता है वो always in whole number or you can say the simple numerical ratio. For example, if I am saying about hydrogen molecules, then in hydrogen molecules the hydrogen atoms are always combined one hydrogen plus one hydrogen, not the half hydrogen plus 3 by 2 hydrogen, not like that. It is always in simple whole number or numerical ratio. Next one is बच्चों atomic mass. Simply the atomic mass is calculated of an atom by the combination of the mass of proton with the mass of neutrons. When you combine the mass of proton and the neutrons, then that will be form atomic mass. All of you students have to remember atomic
mass and atomic number from hydrogen to zinc. Maximum 30 elements you have to learn. Here I am giving an examples where the carbon, the number of proton is 6 because the number of electron is 6, and the number of neutron is also 6, so the atomic mass is 12. But according to the scientists, here the SI units of atomic mass is AMU, that is the atomic mass units. So after the number you have to use AMU. Next one is एवरेज एटॉमिक मास. बच्चों एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? अगर कोई जैसे कि मैं बोली सारे जो एलिमेंट्स हो या फिर एटम्स है वो सारे बच्चों नेचुरली अकर होता है. जो भी नेचुरली अकरिंग चीज़ होता है उसमें मासेस का वेरिएशन होता है. कोई कोई मासेस का वेरिएशन जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का उसका मास जो कि आइसोटोप के हिसाब से वेरिएशन होता है, कभी 1 होता है, कभी 2 होता है, कभी 3 होता है. सो अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएशंस ऑफ mass, so we have to always calculate the atomic average atomic mass, otherwise the numerical or the calculation will be somehow difficulty. So there is some average atomic mass you have to remember. How to calculate average atomic mass? Then here it is in your screen. For example, so I am giving a examples of boron, where the boron has naturally occurring elements, but it has two isotopes. One is boron 10 and another one is boron 11. So in boron 10, in nature there is only 19.8% presence, but boron 11, that is occur in our environment, that is total 100 to 80.2% is presence. So if we calculate the average atomic mass of these two, then it will be 10.81, that we will take 11. Then come to our molecular mass. बच्चों जब भी हम मोलिकुलर मास के बारे में बोलते हैं तब हमको याद रखना होता है कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स. जब भी हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं तो वो क्या होता है, सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है. जो भी मॉलिकुलर फार्मूला ले लो, फॉर एग्जांपल्स वाटर में जो कि कॉम्बिनेशन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे जितने तो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइंस करके हम वाटर बनाते हैं, वो सारे को अगर एटॉमिक मासेस को हम मिला लेंगे तो हम मॉलिकुलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इन सिंपल वे वी कैन से दैट if the sum of atomic mass of all the elements present in a molecules are calculated, then that will be your molecular mass. Here I am giving various examples. Water, that is 18U. I am writing here U. U also you can write the unit of mass. H2SO4, that is sulfuric acids. Here I am calculating 1 into 2, 1 for hydrogen atomic mass and 2 for, due to presence of 2 hydrogen atom. So if the number of atoms is increases, then that will be multiplied with the atomic mass. Then I am adding, or we are putting the plus sign because it is different elements, that is sulfur, and the atomic mass is 32, plus sulfur is also present in one atom, so I am not multiplying here 1, you can add, plus oxygen, the atomic mass is 16. Due to presence of 4 atoms of oxygen, then we will multiply into 4, then it equals to 98U. So in this way we can calculate the molecular masses. So your task is calculate the nitric acids and phosphorus pentachloride and give me the answers. Thank you, students.